एक शुरुआत है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये एक एडवेंचर डेस्टिनेशन बन रही है। जैसे कि आपने देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से यहाँ पे एक टूरिज़्म बूम हो रहा है। नए नए एवेन्यूज़ टूरिस्ट को दिखाने के लिए हमने यहाँ बहुत सारे इक़दाम उठाए। आज ये हमने पहली बार यहाँ पे Formula-4 का इक़दाम किया गया है। डेफिनेटली बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ हम जा रहे हैं। उसमें एक फार्मूला का भी है। हम गंडोला भी 1-2 जगह और सेटअप कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गंडोला के लिए भी हमारा बहुत ज़्यादा रश रहता है। गुलमर्ग हाउसफुल रहता है। अब हम और भी डेस्टिनेशन की तरफ हम वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स का इक़दाम कर रहे हैं। उसके लिए में सबसे बड़ी ये पैगाम है कि ये जो यहाँ पे जिन्होंने भी ये स्टंट्स किए, जिन्होंने भी परफॉर्म्स किया है, ये सारे ट्रेंड हैं। आप ये मेहरबानी करके आप ये ट्राई ना करें और अपने जान की, अपने माल की हिफाजत करें। और एक पैगाम मैं सारे कश्मीरी वासियों को देना चाहता हूँ क्योंकि आज से हमारा MCC मॉडल कोड ऑफ वो अनाउंस हुआ है, तो सारे लोग टाइम पे जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग है उस टाइम अपना वोट जरूर दें। थैंक यू। ये हमने एक इंडियन कार रेसिंग फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है JK टूरिज्म ने, एंड वी हैड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। आपने देखा इसमें एक यंग जो थे ड्राइवर्स, उनका भी एक था। तो बेसिकली जो हमारी Formula-4 कार्स थी वो हमने यहाँ पर एक कार शो किया on the banks of the Dal Lake, because we thought that this was a very beautiful spot and iconic spot जो है immediately कोई भी देखेगा तो पता चलता है कश्मीर में हो रहा है। This is the first time कि यहाँ पर एक कार शो इस किस्म का ऑर्गेनाइज किया गया है। So this is a series of adventure sports जो हमारे हैं events that are going to be held over the year. So we are hoping for a good season ahead. देखिए होता क्या है कि कहीं पर भी when you bring attention to a place, कार रेसिंग जो यहाँ पर Formula-4 कार रेसिंग भी, this has happened for the first time and it has happened in the backdrop of the beautiful Zabarwan mountains. So ये visuals जो हैं they go all across the world, and this is what brings attention to a region. And this is the spring, the advent of spring, and we are going to have blossoms and we're going to have the tulip garden open soon. So this is to bring focus that Kashmir is open. Kashmir welcomes everyone, and we're going to have more and more such activities in the future also. My name is Abhay and I'm from Bangalore. Just a show run, so just wanted to just drove around the road of Srinagar and around the Dal Lake, of course. So yeah, the scenery is really very nice and roads are amazing, in fact. So I was really very grateful to be chosen to drive over here. And I would like to thank JK and RPPL for organizing this event. Thank you. I was really very excited, but I was driving the go-karts. I haven't driven the F4 yet, so I think my time will come, I guess, the next year, maybe this year. So we'll see what happens. Yep. Thank you. A big thank you to RPPL JNK Tourism for organizing such a wonderful event in Kashmir for the first time. For me, it was a great honor, privilege to be able to drive the Formula-4 cars around the Dal Lake. And I know this is just the beginning of greater things to come for Indian motorsport in the future. Over here, we had such a great crowd when we were performing. So many motorsport enthusiasts. I think it's just starting in Jammu and Kashmir now, and I know in the future it's going to go to greater heights, more drivers, more enthusiasts, and I can't wait for the future. Done, perfect.